putting it into effect. Because consistent with the theme I have been saying, Pakistan, rightly or wrongly, fairly or unfairly, is perceived to be a high-risk jurisdiction. I don't enjoy, I feel pain saying this, but this is the elephant in the room that we have to deal with. And investors who have to raise financing, who have to get boards to approve with different governance, compliance, risk, and what have you, are going to go through a detailed due diligence before projects in Pakistan go through that final important step of receiving final investment decisions. That final investment decisions will require that recourse in the case there are road stops post investment. And the Investment Protection Treaty gives some assurance that there is a recourse for that through sort of dispute resolution mechanism, arbitration, and what have you. So I would urge that, and the same protection that we ask for in the Pakistan jurisdiction, of course, is afforded in Saudi Arabia and the other GCC countries, because these agreements by their nature are bilateral, so they are reciprocal and equally binding on us. So I think that's a key agreement. I think the other G2G mechanism that we want to put in place is between the government side activating on the investment side the coordination committee, where His Excellency Mohammed Tuwaijri has been designated by His Royal Highness the Crown Prince, and he's leading a very powerful team that is in the royal court. They are literally meters away from the Crown Prince, who is probably the busiest man on the planet, with some of the most ambitious agendas that you can think of. And he has elected to place the Pakistan file within that royal court team, because he wants to be personally have his finger on the pulse of how are we managing. And Your Excellency, Minister Mossadegh, has been designated by the Honorable PM to be his counterpart. And we're encouraged because you know the kingdom better than us. You've been there from the inside out, you're very analytical, you're very strategic. You know the governance within the kingdom, you know the sectors, you know. So we're encouraged that you're not just in an executive capacity within the Pakistan government of reform that has been launched recently, but you're also very knowledgeable about the kingdom. You know what can and cannot be done, and you're also a private sector driven in your career. So you also know that ultimately what we need to do is enable the private sector to do things. So within the scope of that G2G relationship, His Excellency Tuwaijri and his team have asked MISA to take the lead on everything about investment, everything about channeling private sector funding, everything about risk mitigation, and I just talked about the investment protection
Everything about investment protection, everything about privatization, everything about funding, third party. नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदी अरब आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। B2B मुलाकातें सूदमंद साबित होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर और जैन कुरैशी की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। चारों रहनुमाओं की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। अदालत का चारों रहनुमाओं को 8 नवंबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। Experience the luxury of Fassel Sanitary. Innovation for a better lifestyle. Stylish and glamorous fittings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle. रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल पावरफुल पल्सेटर और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। मिल जाए तो मजे की नहीं मिठास चखते से नहीं कुछ भी ऊपरी सीधी सादी खुशी है सुपर। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल पावरफुल पल्सेटर और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब वक्त है आपको अपडेट करने का कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी तौर पर, हुकूमती तौर पर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, वही बताने लगी हूँ। आप सब्र, रुको जरा, सब्र करो। बहरहाल हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अपडेटेड है। जैसे कि हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे। हम तो कहते हैं ना क्या चल रहा है, अपडेट करते हैं। हम तो कहते हैं क्या चल रहा है, लोग कहते हैं चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये तो बताओ, पर्दे के पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन चले मुल्क की सियासी मंजरनामा जो है वो बता देते हैं आपको कि मुजव्विजा आईनी तरमीम जो है उसके बारे में बात की जा रही है, बार बार की जा रही है। ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस सिलसिले में आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास बुला लिया गया। इस इजलास की सरबराही सैयद खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा करेंगे, जिसमें इस आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। मुसव्वदे का मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? मुसव्वदे का मसला, इस सेगमेंट का टाइटल है मुसव्वदे का मसला। खैर, इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर आम नुमाइंदे शामिल होंगे और देखते हैं इस पे इन कैमरा इजलास है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को भी इतला दी गई है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, उनकी भी शिरकत मुतवक्के है। डेवलपमेंट है वैसे कि PTI भी शामिल होगी। PTI शामिल तो वो हो रहे हैं। अब निगोशिएशंस कहां तक होती हैं, ये बड़ा अहम नुकता है। दूसरी जानिब कल जो एक अहम मुलाकात हुई वो नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान हुई। इट वाज अ हाई लेवल मीटिंग। दोनों जो पार्टी रहनुमा एक दूसरे से मिले। बिलावल साहब ने एक्चुअली तारीफ की नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल विजडम की। उन्होंने कहा कि हम आपके एक्सपीरियंस के, तजर्बे की कदर करते हैं। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इनकी मदर ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ साइन किया था, उसका भी तस्करा आया बीच में कि उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए इक़दामात करने हैं। और दूसरी जानब MQM भी अपनी कुछ रिजर्वेशंस रखती है। MQM कहती है कि यह वक्त है यहीं पे हम अपनी जो शराइत है वो भी मनवा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने आईनी तरमीम अगर करनी है ना तो उसके अंदर हमारे पॉइंट्स जो है उनको भी आपको शामिल करना पड़ेगा। आर्टिकल 140A में भी वो कहते हैं कि आपको तरमीम करनी पड़ेगी। नून लीग और MQM जो है वो तैयार है। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, ये MQM की तरफ से कहा गया है। होने क्या जा रहा है, क्या वाकई में आईनी तरमीम हो जाएगी? और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं सोच रही हूँ कब से कि ये जो आईनी तरमीम है इससे अवाम का क्या फायदा होगा? आपका और मेरा क्या फायदा होना है? अवाम के नुमाइंदों का फायदा होगा ना। अगली बात समझे। वैसे कभी भी मैं सोचता हूँ ये सारा चूचू का मुरब्बा बनाया था उस वक्त, इतनी अब MQM सब, कभी JUI की मिन्नतें, कभी MQM की मिन्नतें, सोचते तो होंगे कि हमने क्या किया। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं और इस शो में हमारी आमिर साहब से पहली बार मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। आमिर भाई, सबसे पहले तो आप हमारे सामने अपना तज्जिया रखिए सारी सूरत हाल के ऊपर, जो करंट डेवलपमेंट्स है। कल जब शहरी रहमान से पूछा गया कि क्या ये सब कुछ 25 से पहले हो जाएगा तो उन्होंने कहा हो भी सकता है, क्यों नहीं। तो आपका क्या टेक है इस पे? वो अगर कुछ सोच के करते तो आज हम यहाँ तो ना होते जो भी लोग सोचते हैं। तो पहली बात तो ये है। फिर MQM पे बात कर लें। MQM का लॉलीपॉप होगा और ज्यादातर यही होगा कि जी चूंकि मुसवदा तो बहुत बड़ा था
और आपकी तजावीज भी आ गई हैं, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला अब चलता रहेगा और उसमें हम आपकी तजावीज को नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। फिलहाल जो बहुत जरूरी चीजें हैं हम उनको कर रहे हैं कि जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वफाकी आईनी अदालत है, हम उसको बनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुल्क बड़े मसाइल में है। सही। अच्छा, ये बात जो हम करते हैं ना कि आम आदमी का मसला, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इशू ये है कि हमारे जजों ने भी आम आदमी के 27 लाख केस रखे हुए अपने पास। क्या आम आदमी उसमें नहीं आता कि हमारी अदलिया का सिस्टम ही सारे का सारा मैनिपुलेट हुआ है। आला अदलिया में जजेस आते हैं चैम्बर्स के साथ, चिटों के साथ, और फिर वो नीचे तक चली जाती है बात। आपका मॉनिटरिंग निजाम हाई कोर्ट का तकरीबन फेल हो चुका हुआ है, क्योंकि जब कहानी होती है तो ये हाई कोर्ट का काम है कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को चेक करे और सेशन जजेस नीचे सिविल, सीनियर सिविल जज सबको चेक करें कि भाई कितनी कंप्लाइंट। बिल्कुल आप बिल्कुल आमिर साहब, ये मसला तो डेफिनेटली हर तरह की मराहत तमाम जज साहिबान को हासिल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये है, इसकी टाइमिंग के ऊपर बात की जा रही है। क्या हमारे मुल्क के दीगर मसले जो हैं वो हल हो गए हैं? क्या हेल्थ का मसला हल हो गया है, एजुकेशन का मसला हल हो गया है, इकोनॉमी का मसला हल हो गया है? इस वक्त पे आके हुकूमत की सारी जो काविशें हैं, सारी उनकी एफर्ट्स जो हैं इन आईनी तरमीम के ऊपर लग गई है। ऑपोजिशन कह रही है कि हमने नहीं होने देनी, ये कह रहे हैं हम करवा के रहेंगे। तो बात सिर्फ टाइमिंग की हो रही है, इस चीज़ पे नहीं हो रही कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने इस मामले में राय हो सकती है, बट द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, क्योंकि आपको आला अदलिया में आम आदमी नजर आया तो आप कहने लगी नहीं है मैंने इधर आना है। चले, इधर आप आती हैं तो मैं 1990 में ले जाता हूँ, जब मोटरवे शुरू हुए। तो जो उस वक्त के नागदीन थे बिल्कुल इसी तरह कह रहे थे कि इस मुल्क को तो जरूरत ही नहीं है, और आज ये मुल्क बगैर मोटरवे के चलता नहीं। और जहां कमी है, हैदराबाद, सक्खर, सब कह रहे हैं अब इसको क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे, इसको शुरू करें और इसे मुकम्मल करें। ये मसले हैं हमारे यहाँ मेट्रो बस चले तो कहते हैं जी वो हेल्थ नहीं बनी, स्कूल नहीं बने। ये इश्यूज चलते रहते हैं। जब मसाइल बेपनाह हो तो जो चीज हो रही है उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए। टाइमिंग के ऊपर तो हमेशा मसला है। 6 से अगर चल रही है बात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और आपने 18वीं तरमीम की, उस वक्त आपने नहीं किया, 63A या 62(1)(f) में आपको मार पड़ी, आपने सारी जिंदगी के लिए नाअहली ली, तो आपको जवाब में ताना दिया गया कि 63(2) आपको उड़ाने के लिए 18वीं तरमीम में कहा गया था, आपने नहीं उड़वाई। उस वक्त आप इसके पासबान बन गया है, आपको आज इसकी डज पहुंची है। यही है ना हमारे यहाँ। तो चले, जो हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से एक तकसीम रही है। सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिल के खेलते रहे हैं, और बाकी सब उनके साथ फुटबॉल बने रहे हैं कि उनको किक्स पड़ती रही हैं। इस दफा अदलिया थोड़ी सी अलग हुई है, वो फौज से अलग चल रही है और मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए सीधी सी बात है। अच्छा, इस पे एक बड़ा अहम नुक्ता है ना, ठीक है, इस पे बड़ा एक अहम नुक्ता है। ऑब्वियसली हम इस पे